सुमित बताइए। शुक्रिया। मेरे जो शेयर चुना गया है वो फार्मा स्पेस से है। कोपरान इसको चुना गया है। कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स अभी तक नहीं आया, लेकिन हाँ एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद ज़रूर लगाई जा रही है। ऑपरेशनल फ्रंट पर करीब 4% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो इस तिमाही के अंदर बढ़ने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। लगातार कंपनी अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को ईज आउट कर रही है। अगर आप देखें पिछले 4 से 5 तिमाही से लगातार इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर एक कमी आती हुई दिखाई पड़ रही है। ये शो करता है कि कंपनी गोइंग फॉरवर्ड डेट फ्री होने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज़ जो अच्छी है वो यही कंपनी प्रमोटर में जो स्टेक है वो बढ़ रहा है। लगातार 3 तिमाही से प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हायर लेवल से शेयर बहुत टूट चुका था, करीब 81 रुपए के आसपास के हायर लेवल से, वहां से टूट के शेयर 51 रुपए 50 रुपए के आसपास आ चुका था और शायद इसीलिए प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है उसके अंदर एक लगातार इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैश फ्लो साउंड हुए हैं पिछली तिमाही के अंदर। अगर आप नतीजों में नजर डालें तो कोपरान की एक रिसर्च आर्म के अंदर कंपनी ने इन्वेस्ट किया था, इस वजह से थोड़ा प्रेशर आया था। लेकिन हाँ उस जैसे जैसे उसका एक इंपैक्ट आना शुरू हुआ कंपनी की बुक्स के अंदर, वो साफ तौर पर कंपनी की बॉटम लाइन को इंप्रूव करेगा। दूसरा, कंपनी के फार्मा इंग्रेडिएंट बिजनेस जो है वो भी एक अच्छी ग्रोथ रहने की उम्मीद है। पिछली तिमाही में भी अच्छा आंकड़ा था, इस तिमाही के अंदर भी एक अच्छी ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। शेयर बुक वैल्यू के बेहद नजदीक कामकाज कर रहा है, करीब 40 से 41 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है, 51 रुपए के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है। और एक और अहम चीज़ जो है वो है इसकी वैल्यू। FY17 के लिए अनुमानित ईपीएस करीब 9 रुपए के आसपास और महज 6 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर अगर आप देखें तो 27 से 28 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। तो सेक्टर के कंपैरिजन में भी वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं और शायद इसीलिए प्रमोटर का जो स्टेक है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फर्स्ट कॉल की एक रिपोर्ट को रेफर किया गया, उनका मानना है करीब 74 रुपए तक की 40 शेयर आने वाले समय में दिखा सकता है। कोपरान आपके स्क्रीन पर देखें 54 ऑलमोस्ट 25 के स्तर पे 8% ऊपर कारोबार कर रहा है। शुक्रिया सुमित आपका है। लेकिन इस बीच अगर आप जुबिलेंट फूड्स को देखें तो अब ये स्टॉक रिट्रेस होकर ऑलमोस्ट 108 रुपए नीचे 10% नीचे अगर आप देखें कारोबार कर रहा है। तो जोरदार गिरावट यहाँ पे जुबिलेंट फूड्स में 1000 रुपए के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रीच करके 113 रुपए नीचे कारोबार कर रहा है। अब चलते हैं मिस्टर शंकर के साथ बात करते हैं और फिर एग्जैक्टली आपका आउटलुक क्या है। आई मीन अर्निंग सीजन आपने देख लिया, इक्का दुक्का रिजल्ट्स बाकी हैं। आई थिंक 2-3 चीज़ें बड़ी एक्टिव रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिस्कशन में शामिल की जा रही हैं। वो है एक मानसून, एक अर्निंग सीजन और यूएस में रेट हाइक की पॉसिबिलिटी। ऐसे में इंडियन मार्केट्स के अप्रॉक्सीमेटली जो ट्रैजेक्टरी रहेगी वो क्या रहेगी? अभी अब अप्रोचिंग 8000 या फिर अभी यहाँ पे बाजार में आप डाउन साइड देख रहे हैं? अच्छा, हमारा एस्टिमेट है मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज पे होगा 7500 टू 8400 लेवल्स, और दैट इज अ ट्रेडिंग रेंज वो बाजार को नियर टर्म में हम दिख रहे हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अर्निंग्स में क्या क्या चेंजेस हो गया बैंक्स में, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। अच्छा, उसका लार्जेस्ट बैंक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई का रिजल्ट आने के बाकी है, एंड वो रिजल्ट कैसा होगा विल हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द टोटल बैंकिंग अर्निंग्स फॉर ईयर एंडेड मार्च 16। True. ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इफ यू लुक एट इट FY15 में अप्रैल 15 में मार्केट एक्सपेक्टेशंस वाज 15% बिजनेस ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर में होगा करके, बट अभी एक पुअर परफॉर्मेंस की वजह से एसबीआई का रिजल्ट आया नहीं है। ऑलरेडी वी आर सीइंग अराउंड 12.9% कंट्रैक्शन इन अर्निंग्स, डी ग्रोथ इन अर्निंग्स। सो एसबीआई का रिजल्ट में भी पीएनबी जैसा नहीं है तो बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा बहुत झटका मिला है, तो then you will see the entire earnings growth in FY16 for the banking sector actually coming down quite dramatically. इसका consequence क्या है next year पे? Because you are coming from a negative earnings this year, you will see a sharp earnings growth happening in FY17 next year के लिए. So the Sensex or Nifty as a whole, you may have a larger earnings growth. So मेरा व्यू है more than earnings growth in these sectors, it is going to be more stock specific करके movement आएगा for remaining part. That's going to be the biggest clue. Andrew, what's your strategy? Like you rightly mentioned that, you know, if you look at the index right now, there is nothing much to write home about. But if we refer to some stocks and let us restrict ourselves to the stocks within the index right now. So 3 stocks which are capable of actually contributing to the index, let's talk about them. One is ITC, second is Infosys, and third is obviously SBI. What's your view on these 3 stocks?
So with emphasis, probably a little bit more optimistic in the short run. As you know, I'm not a big fan of the sector overall because I think the growth rates, will continue to be under pressure. But I do expect with a stronger dollar that the rupee will weaken towards the 70 level. So that will give, underpin the earnings for emphasis. With ITC, the game just continues to be tobacco and nothing else. Within the whole group is really moving the needle. If anything, the consumer side of it is reeling under a lot of pressure from the industry. So, you got to look at the tobacco. It got beaten down a bit and it's had a reasonable run. I don't think I'd want to chase it from here unless I want a bit of safety, and that's about the best I can say. And sorry, the last one was? SBI. SBI. So I think we'll still await to see what they have to say. I got a feeling that merger is more forced than it is them both running to each other for the benefits of merging. And I think if I remember, I thought the chairman had said, the chairperson had said that doing a few months back, that is, that doing a merger now wouldn't be the right timing. So I don't know how the timing's become so great now. I just think the whole banking sector, for the PSU banks anyway, is going to remain under huge pressure. I know everyone's saying we're towards the bottom of the cycle, and you might be towards the bottom of the cycle in terms of NPAs, but you also have to get growth thereafter. And I think that's going to be the big challenge for PSU banks, because I think below the kind of the chairmans and so forth, people are going to be running scared to give credit. Given that they're going to be under scrutiny if they make non-performing loans going forward. So I just see the whole sector of PSU banks continue to lose market share to the private banks. So I don't think that's one of the stocks I'd want to buy. But Andrew, what exactly you are willing to buy out of index? I mean, within the mid-cap and small-cap class, and especially considering the fact that Q4 numbers were quite strong and the possibility of good set of numbers in Q1 of FY17. What exactly would you like to buy in the mid-cap class right now? See, so where we are at the moment is that India's market, actually not dissimilar to other markets around the world, is trading on a pretty reasonable PE, and there's no real catalyst. The earnings aren't picking up so sharply. Now, the economy is where it is, and obviously if the monsoons are good, then you will see in the second half, the multiplier effect across many different industries starting to play out, and that will be where you could see a re-rating of the market, i.e. the PE multiple is expanded as earnings will follow through, years on later. And in that scenario, obviously we're looking at sectors like the auto sector, more two-wheelers than the four-wheelers, so you have Bajaj and Hero, which would be the favourites there. And then obviously you'd be looking at the private banking sector, because as the economy grows, there will be companies out there who will want to expand as well. And then probably look a little bit again at the cyclicals within that as the economy starts to expand. So that's where we're concentrating our efforts at the moment. But in the very short term, as I said at the very beginning, you're going to have volatility and no real catalyst for the market to move higher at this stage unless the monsoons are good. True.